A democracia tem significados diferentes, dependendo de quem vê e de onde vê. O canal Futuro exibe uma série de 10 documentários que revela as várias faces da democracia no mundo, sob o ponto de vista de quem vive em sociedades democráticas, de quem não conhece ou até nem acredita nesse sistema. É o projeto Por que Democracia? Why Democracy, em inglês. Uma ação que envolve mais de 40 emissoras de TV, com transmissões para aproximadamente 180 países. Os filmes serão transmitidos simultaneamente na internet e em canais de televisão, para um público estimado em 300 milhões de pessoas, entre elas você. São histórias comoventes, sofridas, relatos inusitados e também engraçados, trazidos à tela por cineastas de várias partes do mundo. A maior democracia do mundo é o tema de A Procura de Gandhi, documentário que o Futuro exibe dentro do projeto Por que Democracia? O filme explora o legado do ativista da paz e não violência para os movimentos democráticos do século XXI. Não perca, vai começar agora. I grew up in India with stories about Mahatma Gandhi, the father of our nation. I was critical of some of his ideas, but I always admired his courage and his vision. He was born in Gujarat, and this is where my journey began. I shall strive for an India in which the poorest shall feel that it is their country in whose making they have an effective voice. An India in which there shall be no high class and low class of people. And above all, an India in which all communities shall live in perfect harmony. I am on Ellis Bridge in Ahmedabad, where almost 80 years ago, Gandhi made a speech that he hoped would change India's destiny. Immediately after, he began his historic salt march against the injustice of British rule that denied Indians the right to make salt. But what did Gandhi mean to people today? I wanted to follow the trail of his march to see if his values were still alive. I started my search for Gandhi driving into the city. And the face that I saw staring down at me from every billboard was of a very different kind of leader, the Chief Minister of Gujarat, Narendra Modi. और इस ग्लोबल इकोनॉमी एरा में लेवल प्ले फील्ड के बिना भारत इस आर्थिक युद्ध को जीत नहीं सकता। अगर इस समय हम ये अवसर खो देंगे तो फिर एक बार जब हम 20वीं सदी में पिछड़ गए थे, 21वीं सदी में भी पिछड़ गए। I'm not sure what Gandhi would have made of Modi's India. A shining India with one of the fastest growing economies in the world, where the freedom to buy and spend seems to be the greatest freedom of all. But Gandhi would definitely have had a lot to say about the other India that they did not like to advertise in government brochures. The India in which 300 million poor people dreamed of freedom from hunger and fear.
I needed to see the home where Gandhi had lived. Here, at the Sabarmati Ashram, he and his followers lived a simple life based on religious devotion and self-discipline. In these peaceful and Spartan surroundings, Gandhi developed his idea of non-violent resistance or satyagraha, which became a crucial tool in India's struggle for freedom. Gandhi invented modern protest politics. In the years to follow, satyagraha would inspire generations of civil rights leaders like Martin Luther King and Nelson Mandela. ये महात्मा गांधी जी का निवास स्थान है। ये गांधी जी का मीटिंग रूम था, सिटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम ऑफ महात्मा गांधी जी। He received all dignitaries of the world from India abroad in this room. Satyagraha is truth force. I have also called it love force or soul force. A satyagrahi will always try to overcome evil by good, anger by love, untruth by truth, violence by non-violence. Gandhi had always strived for Hindu-Muslim brotherhood. But as I drove through modern Gujarat, his words seemed like empty slogans from a distant past. 5 years ago, these streets were the scene of India's worst massacre in 50 years. Hindu fundamentalist groups targeted the Muslim community all over the state. More than 2,000 Muslims were killed, more than 400 women raped, over 100,000 were displaced and homeless. The police and the administration did nothing to stop the violence. Narendra Modi's stand against Muslims won him the Hindu vote. He was re-elected chief minister and became more powerful than ever before. How could this have happened here, of all places? I went to meet the Muslim women who were victims of the violence. Many had seen their own families killed in front of their eyes. Sophia Khan, a lawyer in Ahmedabad, was counseling them. गांधी जी कौन से विचार में मानते थे? अहिंसा। क्या मतलब होता है अहिंसा का? सामने वो साइलेंट का, लेकिन सामने उन पे वो नहीं करनी। बदला नहीं देता। नाम ही हटा दिया ना। गांधी जी ने जिसने देश आजाद करा उसके लिए नाम ही सब हटा दिया। कोई खिलाफ है ना, कांग्रेस के खिलाफ तो है। हिंदू मुसलमान में एक दूसरे को लड़ाना शुरू कर दिया तो फिर उनकी बात तो दबी जाएगी। ये आपस में लड़ते रहेंगे, वो अपना मौके का फायदा उठाते रहेंगे। देश तो अच्छा था, वहाँ देश में सब खोखले लोग पैदा हुए हैं ना। ये सब भाजपा वालों ने सब करा है, शिवसेना वालों ने, बजरंग दल वालों ने, ये सब हिंदू लोगों का ये काम है, कोई दूसरे का काम ही नहीं है। ये नीच लोगों को जिंदा काट लेने चाहिए, जिंदा खड़े खड़े काट देने चाहिए। पर तो फिर हमारे में उनमें क्या फर्क है? सही बात है। हम सिर्फ एक ऑब्जर्व कर लेते हैं, मे भी गांधी जी के स्टैच्यूज होंगे और बहुत सारे गांधी जी के नाम पे आश्रम्स हैं यहाँ पर, बस उतना ही है। वो जो वैल्यूज़ जिनकी बात की गांधी जी ने, या मतलब मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि भाई किस देश का एक जिसको हम राष्ट्रपिता कहते हैं, वो उस देश की माइनॉरिटी के लिए अपनी जान दे दिया कि भाई अल्टीमेटली उसको मारा गया कि भी तुमने क्यों पाकिस्तान बनाया करके। तो उस लेवल की जो गांधी ने बात की आज हमें तो बिल्कुल नज़र नहीं आती। तो मुझे तो गांधी जी कहीं दिखते ही नहीं है गुजरात में। ये बैंगल्स बन रही है प्लास्टिक की, और ऐसा मेरे पास 7 मशीन था पहले,
लेकिन जो राइट्स हुआ गुजरात में, तो उसमें ये सब बहुत 20-1 इंसान का जो पब्लिक आया, उन्होंने अटैक किया हम पे, और उनके साथ स्थानिक लोगों ने भी उनको सपोर्ट किया, और ये पूरा जो कारखाना उसको जला दिया गया था, और जो मेरा सब माल सामान था सब लूट लिया गया था। उस समय मेरे पास तकरीबन 20-22 कारीगर थे, आज 2-3 कारीगर से मैंने काम शुरू किया है। पहले ये भी सब बना हुआ था, ये सब पूरी बाउंड्री थी, लेकिन उस टाइम को सब तोड़ डाला था, फिर उसके बाद बना नहीं सके हम। जो मंजर मेरे बच्चों ने देखा था वो आज तक भूले नहीं है, वो यहाँ पे आना गवारा ही नहीं करते। इस बार हमारा जो फोकस एरिया है वो SEZ का। SEZ ड्राइविंग फोर्स बनने वाले हैं और गुजरात ने इसको विजुलाइज किया है और इसलिए हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। What Modi doesn't mention is that these zones could displace thousands of poor people from their homes, giving their land to global multinational corporations. These companies would not have to follow the Indian labor laws or pay normal taxes. As is happening in other parts of India, Modi's dream is to transform Ahmedabad into a global megacity. Every day, thousands of poor people migrate to the city from the village. They come to find work. But in the city, there is no relief. And as the city grows fatter, it devours everything in its path. Okay, now let me ask, what brings you to this shopping mall? It's the food and shopping, all this, movies. It's good. It's too good because यहाँ की मिडिल क्लास की पब्लिक भी अभी एंजॉय कर सकती है ना, ठीक है ना, अफोर्डेबल। और यहाँ की जो फाइनेंशियली जो इकोनॉमिकल है वो भी चेंज हो रही है ना। फाइनेंशियल इकोनॉमिकल जो हम लोगों की जो शॉपिंग की जो पहले जो खरीद शक्ति बोलते हैं ना उसको, वो ज़्यादा चेंज हो रही है। आपको नहीं लगता है? तो पूछूंगा, आज आपकी मतलब फेवरेट राजनीतिक लीडर कौन है? ऑफकोर्स नरेंद्र मोदी। Why do you like? हाँ, बिकॉज उन्हें जो अहमदाबाद की सिटी चेंज कर दी है, इट इज़ टू गुड, ही इज़ अ वेरी ब्रिलियंट। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि मैं अहमदाबाद के अंदर एक भी झुग्गी बस्ती रहने नहीं दूंगा। तो हम उस मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं कि आप लाख कोशिश कीजिए, लेकिन झुग्गी बस्ती कभी कम नहीं होगी। आप गरीब को गरीब बनाओगे तो और झुग्गी बस्ती पैदा होती ही रहेगी। और यहाँ पे लोग गार्डन बनाना चाहते हैं, हाई राइज बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, स्विमिंग पूल बनाना चाहते हैं, और शॉपिंग सेंटर बनाना चाहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। और वो उनको यहाँ टूरिस्ट के लिए, एक मनोरंजन के लिए कुछ बनाना है, लेकिन जो यहाँ पे स्लम में जो गरीब दोनों किनारे पे 40,000 परिवार रह रहे हैं, उनके लिए आज तक उन्होंने कुछ सोचा नहीं है। हेलो, नहीं बेजा, वो सारी रात मेरी पास से रहते थे, मैं इधर बैठ रही थी। बरसात को ऐसा बरसात, झमचक बरसात, बहुत बरसात गिरा, और मैं इधर ऐसा करके बैठ गई। वो मेरे पीछे से नहीं हटा। आपका साथ नहीं छोड़ता है वो? नहीं, अच्छी बात है ना। माँ तो छोड़ देते हैं बाबूजी, माँ छोड़ देते हैं। वो जानवर है ना, वफादार है अपना, वो नहीं छोड़ते, बिल्कुल नहीं छोड़ते। ऐसे है, बहुत दिल वाला है। वो सब आए थे, फिर वो जो यहाँ के जो मेगा सिटी वाले वो आए थे बोलने कहने के लिए। 2 दबान भी आए थे, दबान के साथ आए थे सब तोड़ने फोड़ने के लिए। तो वो लोग ने किले बिठा ले जल। फिर वो लोग ने बोला था, बोले शनिवार का आज के दिन आने वाले थे, पर आए नहीं हो। तो डर तो है हमारे को यार, इतना सारा सामान है, बच्चे हैं, लड़की के लड़के हैं यहाँ पे, पूरा परिवार है यहाँ पे। राजू भाई बताइए, ये जो मेगा सिटी बनने वाली जा रही है, ये जो इसके बारे में आपने क्या सुना है, क्या कहते हैं आपको? साहब अब मेगा सिटी से हमारे कोई मतलब नहीं है।
हमको 2 वक्त की रोटी चाहिए, मजदूरी चाहिए और कुछ चाहिए साहब। क्या चाहिए बाहर वो कुछ नहीं, 2 वक्त की रोटी चाहिए और कुछ नहीं। 2 वक्त की रोटी और रहने के लिए घर चाहिए, बहुत हो गया और कुछ नहीं पैसे साहब बस। और वो जी मजदूरी हमारे को यहाँ से नज़दीक से मिल जाती, अब दूर फेंक देंगे तो हम कहाँ से निकले, किस तरह निकलेंगे और किस तरह रोजी मजदूरी कमा के खाएंगे। People like Raju Bhai and Anita Ben are workers who help maintain the city, but the city has no place for poor people any longer. I found it ironic that the slum dwellers were being thrown out at the exact same spot at Ellis Bridge, where Gandhi made his speech. My aim is to get the salt tax abolished. This is for me one step, the first step towards complete freedom. As the independence movement is essentially for the poorest in the land, the beginning will be made with this evil. I had seen enough of Modi in Ahmedabad. In fact, I wanted to leave the city as quickly as I could. Accompanied by 81 fellow marchers, Gandhi walked for 23 days, covering a distance of 241 miles to Dundee, where he broke the British colonial law by picking up a handful of salt. As I continued to follow his trail, I wondered what lay ahead. 2/3 of India still lives in the villages that we were traveling to. These villages were central to Gandhi's work. I was sure that I would find people who still believed in his principles. Today, the cities dominate and drain the villages so that they are crumbling to ruins. Exploiting of villages is itself organized violence. If we want freedom to be built on non-violence, we will have to give the villages their proper place. Gandhi stopped at many villages along the way. He spoke about tolerance and equality. He spoke of a democracy in which people would have power at the lowest level. रास्ते पे पहले गए हैं? कौन है? हाँ नहीं। नवागाम नायका बोलते हो? हाँ नवागाम। Just a short drive from the bright lights of the city, we came to Navagam, one of the first stops on Gandhi's march. I had heard that a Gandhian, a follower of Gandhi, still lived here. He was someone who had met Gandhi on his march. જે બહારથી ગાંધીજી આવી રહ્યા હતા એટલે કોઈને ખબર જ નહીં, એમને ટાઈમ થઈ ગયો પ્રાર્થનાનો એટલે સીધા ઉતરી પડ્યા, કારણ કે ગામના જાણકાર હતા ગાંધીજી। जैसा गांधी जी जो एक बड़ा आदमी हुआ, महात्मा हुआ, ऐसा जो आदमियों पहला जो होते थे उसको भगवान बोलते थे। लोगों को सुधारने के लिए, अनिष्ट को दूर करने के लिए वो लोगों ने उपदेश दिया था, काम किया था। ऐसी तरह से गांधी जी ने भी किया। जो गांधी जी ने रुकावट नहीं दी थी तो गांधी जी को लोग भगवान बोलने लगते थे, लेकिन गांधी जी ने स्पष्ट चेतावनी दिया था कि खबरदार जो मुझे भगवान माने नहीं, मेरे सामने दीवा भी नहीं करे, मेरे मंदिर भी नहीं होने चाहिए। તો શું કોસકા રહેતી આપણે બારમાં બેસીને નતો પડાય, પડાયા હતા આપણું બારું પણ એકે નથી અહીં આપણે ક્યાં રાખીએ ફોટો મને શોખ નહીં,
गांधी जी का राह पर चलने वाला करीब लाख में एक आदमी होगा। ठीक है, हमारा जैसा कोई थोड़ा थोड़ा असर वाला है। वो हिंदू मुस्लिम वो जो दंगा फसाद हुआ, मुस्लिम कम्युनिटी की बहुत बर्बादी हुई, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? कोई मोमेडन है अपने टीम में? नहीं, कोई मोमेडन नहीं। देखो, हाँ, ये बहुत मुड़ा विचार का सवाल है। गुजराती में कहे છે કૂતરીનું પૂંછડું કૂતરાનું પૂંછડું 10 વર્ષ બોયમાં દાંત સીધું કરી અને ઉપર માટી વાળીને દબાઈ દો, દોરીથી બાંધી દો, પણ 10 વર્ષ પછી કાઢો તો તરત આમ મોકું થઈ જાય। એમ આ કોમ્યુનિટી કદી આજથી નહીં 500 વર્ષનો ઇતિહાસ છે। ત્યારે મુસલમાનો આ દેશમાં જ્યારથી આવ્યા છે ત્યારે અબજો અબજો રૂપિયા તો લૂંટી ગયા છે, અહીંથી અબજો અબજો રૂપિયા જર ઝવેરાત, મંદિરો તોડી નાખ્યા, મૂર્તિઓ તોડી નાખી, લોકોને સ્ત્રીઓને ઉઠાઈ ગયા, બળાત્કારો કર્યા। આ કોમ્યુનિટી એટલે તમે શું રાક્ષસો છો એક જાતના। I was shocked to meet a Gandhian who hated Muslims. In the same village, I met Ketan Bhai. He was a Dalit, a member of the lower castes, and he had just won the village elections. शांत जगह ये स्मशान गृह है नवा गांव का। ये जब ये इलेक्शन आया सरपंच का तो मेरे खिलाफ ही बोलने लगे, ऐसा है वैसा है, ये बाहर का है, और इस तरह से मुझे हराने के लिए पूरी चाल चली उन्होंने। तो प्रत्यक्ष में वो छुआछूत अभी नहीं, लेकिन अंदर से रखते हैं। पहले ऐसा तो नहीं था, नीचे बिठाते थे या फिर अंदर तो आने ही नहीं देते। हाँ, अगर इंटीरियर गांव में तो अभी है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ गांव में, नवा गांव में कम है, प्रत्यक्ष कम है, इंटरनल है। उनको ऐसा लगता है कि ये शासन है वो हम ही कर सकते हैं, ये पिछली जाति के आदमी नहीं कर सकते हैं। उनको मालूम है ये केतन अगर आएगा तो उनको कोई पूछेगा नहीं। Ketan Bhai had big ambitions for his village. As he showed me around Navagam, he told me about his plans to develop the place for all its people, even those who had opposed him. दांडी यात्रा रूट हेरिटेज जो बनने वाला है उसमें गांव की दुकानें भी जाने वाली है। तो मैं सोचता हूँ कि कॉम्प्लेक्स बनाया जाए एक, जो दुकानदार है तो वो पक्की दुकान में वहाँ अपना बिजनेस करे वो। और शौचालय की बहुत समस्या है गांव में, तो शौचालय भी बनाना है। ज़्यादातर क्या होता है कि जेंट्स के लिए तो होती है लेकिन लेडीज़ के लिए तो नहीं होती, लेकिन दोनों के लिए बनाना है यहाँ पे। चाय बनाओ। In Gandhi's time, a Dalit could never have been leader of his village. For me, this was a rare but wonderful example of modern caste mobility in India. ये गटर जब से गटर बनी है तब से गटर की सफाई हुई नहीं है, इसलिए मैंने बोला ना बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। पहली बार होता है सब, ये भी पहली बार हुआ। Ketan Bhai was too modest to call himself a Gandhian, but I felt that by doing small but important things for his village, he was doing Gandhi's work. My notion of democracy is that under it, the weakest should have the same opportunity as the strongest. Western democracy as it functions today is diluted fascism. True democracy cannot be worked by 20 men at the center. It has to be worked by the people of every village. We gotta break the rules and party all the time.
में रास्ता कहाँ है? रास्ता कहाँ जाना है आपको? दभान। यहाँ से आगे चले जाओ, आगे रास्ता आएगा, फिर वहीं से गोबलत, सीधा पानसोली रहकर गोबलत, गोबलत से सीधा हाईवे आ जाएगा। साइड पे रोक के तुम्हारा मैप भी देख लो कि वो जो बताया था whether we're going on the same route or whether we're because he said highway आ जाएगा। You're quite right. Sorry, मेरे ख्याल से वो गलत बताया। रिवर्स कर लो यार। मैं देखो ना क्या बताया था कल उसने। वही तो बताया था रास्ता वो। अब केतन भाई ने बोला अंदर से दभान जाना है हमको। जिस रास्ते पे गांधी जी गए थे वो। Nesta sexta, Associação de Cinema no Futura. Por suas descobertas, eles tiveram indiretamente a vida de milhões em suas mãos. It's not always easy to explain things to the world at large. E por isso, durante a Segunda Grande Guerra, questionaram não só a confiança um no outro. This is what you wanted from me? Not to tell you what the Americans were doing, but to stop them? Tell them we can stop it together. Mas principalmente seus papéis como cientistas. Essa é a triste revelação que atormenta os personagens de Copenhague. Daniel Craig e Stephen Ray em Copenhagen, cartaz do Cine Conhecimento. Nesta sexta, 11h30 da noite, no Futuro. Most of the villages we passed were still segregated along caste lines determined by birth. I disagreed with Gandhi on the question of caste. He wanted to reform the caste system, not get rid of it completely. He believed that the upper castes would voluntarily share power with the lower castes. But this never happened. At Dabhan, Gandhi shocked the social order by bathing at a lower caste well. नमस्ते जी। हाँ नमस्ते। हम लोग डांडी कूच पे काम कर रहे हैं। सुना है यहाँ गांधी जी आए थे कुछ समय पहले, बहुत समय पहले। यहाँ कोई कुआं है जहाँ आसपास सुना है वो आए थे? ओ ये खबर नहीं। पहला ना वक्त मासी ये हमने ख्याल नहीं। हाँ तो हमने शादी थी એટલે બધા આયા। ગઈયાની વખત वो तो हाँ क्या आ जगह पे हरिजन નો કુવો હતો। મારા દાદાની વખત મારા દાદા હતા ને ત્યારે। तो वो कुआं पे घर बना दिया है अभी? हाँ हाँ પૂરી દો પૂરા બતા હતા એ જગ્યા પર પાછું એ ઘર કર્યું। ગઈયાની વખત માં આવેલા અત્યારે નહીં। હે તો જોઈલા ગાંધી બાપુ પૂછ કરસ તે મારા ડોહા હતા ત્યારે ના આવેલા। આવું બોલો બજાર મરી ગયેલા ને ભાડો ખબર છે? ગાંધી બાપુ આયા અમે લોકો નહીં જોયા કે આપણે બધું તમે હતા ના બસ મારાને પીછાને આવડી આ છોડ્યો જેવડી નાની હતી હું મારા દાદાએ જોયા ગઈએ મારા। आप बोलता ये मैं डांडी कूच में आया हूँ तो मेरे को ऐसा बीक लगती है कि वो मकान गिर जाएगा। मेरे को ऐसी बीक लगती है कि मकान गिर जाए तो मैं कौन सी जगह पे रहूँ, ऐसा बोलती है। उम्मीद करता हूँ ऐसा तो कुछ होगा नहीं। हाँ ये ऐसी मैंने आपको कहा ना अगर गांधी जी होते मुझे लगता है वो बहुत खुश होते कि आप हाँ खुश हूँ मैं गांधी जी की जगह पे हैगी तो मैं खुश हूँ कि मैं इधर रहेगी। मैं भाग्यशाली हूँ तो गांधी बापू की वो ना जने नाया था ये जगह पर मैंने घर बनाया था। इनका हृदय के अंदर मैंने घर बसाया। मेरे को एक घर सब लोग आके घर तोड़ डाले तो मैं कहाँ रहूँ। Just 100 meters away across the main road, I found myself in an entirely different world where there was wealth and privilege. हाँ वो धर्मशाला वही यही धर्मशाला। ये धर्मशाला में ही आए थे यार, यहाँ रुके थे।
अब थोड़ा रिवोल्यूशन किया, सब नया नया जमाना बदलता है, वहाँ ऐसे ही होता है। अभी क्या है, वो पुराना जगह हो गया, सब तोड़ के अभी नया पार्टी प्लॉट बना दिया। यहाँ जो फंक्शंस होते हैं पटेल लोगों के होते हैं और जाति के लोग के फंक्शंस नहीं, तो वो क्यों? और उनकी कुछ बिहेवियर अच्छा नहीं है पहले से, इसीलिए संस्था में ज़्यादा नुकसान करते हैं। जब इनको देते हैं तो काम पहले दिए थे। किस तरह उनका बिहेवियर अच्छा होता है बता दें? बिल्कुल ऐसे गंवार ही रहते हैं बिल्कुल, और जो चीज़ हाथ में आए संभाल के नहीं इस्तेमाल करते, इसको पूरी जानवर की तरह बर्ताव करते हैं चीज़ के साथ। टूट जाए तो क्या, जल जाए तो क्या, बिगड़ जाए तो अपना थोड़ा है। The lower castes weren't the only ones kept away from the Patel party. They had hidden Gandhi as well. नहीं, अब तो हमारा नहीं अड़ू कोई नहीं, हमारा कोई अड़ू नहीं, पर तो हमने दर्शन ना करवा दिया। बोलो तो मैं आम छेटा दर्शन करिए। भगवान तो बधा हमने हरखा છે, માણસ બધા હરખા છે, તમે અમે બધા ઉપજાયેલા છે, ભગવાન ના જ ઉપજાયેલા। તમને કાપો તો લોહી નીકળે, અમને કાપો તો લોહી નીકળે, બધા હરખા જ છે, પણ તોય અમારથી આ કાજુ છેટું રાખે છે। હશે ઉપરવાળાની મહેરબાની। બેહો સાહેબ, કામમાં જવાનું મોડું થાય, દવાખાનામાં જવાનું। For me, equality is the fundamental principle of any democracy. I wondered how we could call ourselves the largest democracy in the world when there were still people who were not even allowed to enter their own temples. I thought about how Modi was using religion to achieve his political aims, while Gandhi, despite his personal religious beliefs, had always wanted India to be secular. As soon as we lose the moral basis, we cease to be religious. There is no such thing as religion overriding morality. नहीं तो जे हिंदुओ बीन फरता थे वो बधु ओछू થઈ ગયું। કારણ કે અમુક સિટીમાં આ બધા પેલા શું કહે છે आतंकवाद नहीं, पेला मोमेडियन कसु किया है ना राजकारण में। वो सही बोलता है कि नरेंद्र मोदी ने जो किया वो अच्छा किया, वो हिंदू के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, वो क्यों अच्छा क्यों है उन्होंने क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म को बहुत डर था। और क्या मुसलमानों में डर है अभी? हाँ, वो तो डर तो है। आपको लगता है ये डर अच्छी बात है? हाँ, डर तो रखनी पड़े। डर तो किसी न किसी को तो रखनी चाहिए ना। डर नहीं हो तो दूसरी बार वो थप्पड़ लगाए। Once again, searching for Gandhi's principles, I had found Modi's. We left the village as fast as our wheels could take us. अच्छा यार, एक चीज बताओ, ये जो फिल्म हम लोग बना रहे हैं, आपके गुजरात में गांधी जी का क्या चलता है? नहीं चलता है। आज की तारीख में कोई किसी का थप्पड़ नहीं खाएगा। वो तो ये भी कहते थे ना, अपने आप
दर्द लो पर और लोगों को दर्द मत दो, ये सब उनका था वो। अभी तो कोई नहीं लेने वाले, मेरा दर्द आप थोड़े लेने वाले हो। वो बोलने के लिए सब है, कोई नहीं लेना। As we travelled further, we started to find a number of Gandhi temples. But these temples were abandoned, and this Gandhi god was always bolted and locked and shuttered. Was it a fear that the idols would be broken or stolen? Or was it because this Gandhi god had to be hidden away? Almost as if his ideology was something to fear or be ashamed of. का स्टैंड है, गांधी जी का स्टैंड। पग वो नाक भी तोड़ डाला। वो टूट गया था, वो अभी पहला 5 साल से आया, बनवाई थी गांधी बापू। हाँ, गांधी बापू। I found so many statues that I began to give them names. Blind Gandhi, beaten up Gandhi, baby doll Gandhi. Am I really Gandhi? My personal favorite? I called him Hitler Gandhi. After 7 days of walking, Gandhi and his marchers reached the village of Napa. When we arrived, we were surprised to find that there wasn't a single statue of Gandhi and no posters of Modi either. गुजरात में जब दहशत का माहौल था, तो उसका जो माहौल था वो अलग था। यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। जो हिंदू लोग हैं वो कम है यहाँ रहते, मगर वो उनको कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि बाहर कुछ दंगा हो रहा है, कि यहाँ हमें कुछ खतरा है, कि हमारी कुछ ऐसी बात होगी, हमको मारेंगे, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। सब मिलजुल के रात को बैठते थे और हम उनकी हिफाजत करते थे कि कहीं दूसरा आके उनको ना मार जाए और हमारे नाम बदनाम ना हो जाए। और आजू बाजू के गांव वाले सब मुसलमान यहाँ आए थे और कैंप भी रखा था। वो तो ऐसे ही निकल गए थे, दहशत के मारे, क्या लेंगे, बच्चों को लेके निकल गए। तो ये हिंदू लोग आते थे और उनके ओढ़ने की, खाने की, पीने की सब वो इंतजाम करते थे। और हमारे जो बुजुर्ग हैं गांव वाले, तो उनका तो आदर्श है गांधी जी। हर कौम के, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी गांधी जी को बहुत मानते हैं यहाँ पर। I wondered if Napa was so peaceful because Hindus were a minority here. I wasn't sure. But when I met Kanti Bhai, a Hindu tobacco farmer, he gave us another explanation. અહીંયા પહેલેથી વર્ષોથી એકતા જ છે। અહીંયા 18 જાતના છે, પણ કોઈ કહી ના શકે કે અહીંયા 18 જાતના છે। એક જ જાતિના માણસો એવું જ તમને લાગે, એટલે એકતા છે। બાકી અમારો લગ્ન પ્રસંગ હોય ને તો મુસલમાન બી અમારા લગ્ન પ્રસંગમાં આવે, નહીં તો આપણા લગ્ન પ્રસંગમાં આવે हिंदूમાં। हिंदू कौन है और मुसलमान कौन है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, सब भाई हो। This was the first place we came across where the people seemed to tolerate difference. I think Gandhi would have liked it here. वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, ये पीड़ पराई। The road after Napa was not as uplifting. Everywhere, I started to see images which made me think that Gandhi's dreams about the village were dying. I looked at this once prosperous village and thought about how farmers were committing suicide elsewhere in India. In the US and in Europe, farmers received subsidies and protection. But here in India, farmers were left at the mercy of global market forces.
only one of the many reasons why over 100,000 farmers have killed themselves in the past few years. ભક્તિ કરી કરીને લોક મરી જ ગયા તોય ભેટ્યા નહીં અને મને જંગલીને ભેટ્યા હવે બાપુ એક મને સપના ભેટ્યા એકદમ આવાજ છો ને એટલે આવાજ કેટલો કે કોણનો તમરો બોલી ગયો તમે એવું કીધું મકુ બાપા અંધારું ઘોર કેમ થઈ ગયું મકુ અને પછી તાર લાકડી લઈને બાપુ નીકળ્યા તે મને કે લે બેટા તને 100 ની નોટ આલું કે મકુ બાપુ મને એકલી ના આલશો આ બધી પબ્લિકને આલો ને એટલે બધો ના આલી મને દેખતો એવું તો જોયા કરું અને બધો 100 ની નોટો આલ્યો આમ પછી મારી વાત ખુલી જાય પૈસા ના આપે તમારા પૈસા આપે તમને ના આપે હું જ ઉઠીને જોવા માંડીને કે બાપુ આ તો કઈ જતા ગયા તમે ઘડી વાર ના માની ભેટા મકું ગોજી બાપુ તમારા પાસે રહ્યા એવું આ તો મારી હોડે જ છે I do not believe in the doctrine of the greatest good of the greatest number. It is a heartless doctrine and has done harm to humanity. The only real dignified human doctrine is the greatest good of all. brings to you मिर्ची हम तुम इस वैलेंटाइन अपने प्यार का इजहार कीजिए रेडियो मिर्ची पे We arrived in Surat, the diamond capital of India. It is a city with a prosperous and rapidly growing middle class. Here, Gandhi held his biggest meeting of the Salt March. हमारा गांधी समाज का है और यहाँ शादी ये सब प्रसंग में होते हैं यहाँ पे ये सब गांधी है ज़्यादातर देखो गांधी है कोई रिलेशन नहीं गांधी जी को आजकल ज़्यादा याद किया जाता है वैसा नहीं चलता है समझ रहे हैं ना उतने नेकी से काम करने जाएंगे तो नहीं चलेगा थोड़ा अनिति थोड़ा करना ही पड़ता है थोड़ा मतलब एडजस्ट होकर चलना पड़ता है पूर्ण रूप से सत्य के मार्ग पे नहीं चल सकते। अगर गांधी जी के हिसाब से अगर चलने जाओ तो आज के ट्रेंड में जो नॉर्मल बोलते हैं भ्रष्टाचार जो चीज़ है वो काफ़ी तरीके से कम हो सकती है, लेकिन आज वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। हर जगह कहीं पे भी तुम जाओ, कोई भी फील्ड में जाओ, कैसा भी आपको काम करवाना हो तो उसको पहले घूस या रिश्वत देनी पड़ती है। Somebody dream at night कि Gandhi ji wake up from there, from statue and beat him. Give me AK-46 now. Now Lathi is not there. Now 46 is there. I think so. गांधी जी बनना मुश्किल है और दूसरा गांधी पैदा भी नहीं हो सकता कोई. But the middle class in Surat did remember Gandhi in a very unlikely way. The people claimed that they were laughing for their health. I couldn't help but feel that they were laughing at Gandhi's ideals. I left Surat feeling disillusioned. I wanted to meet someone who believed in Gandhi. I had heard about Gordhan Bhai, who lived in Daman. He was possibly the last living person to take part in Gandhi's Salt March. गोवर्धन भाई एल भक्त मेरी उम्र 102 है। जिसमें जो गांव आता है और
उधर हम लोग को जाने का, उधर जाके सारी व्यवस्था, कुछ की सारी व्यवस्था, उसका कपड़ा, उसका खाना, सब बनाने का काम, व्यवस्था करने का काम हमें रहता। अब तो कैसे नाम बनाओ, खोटा एक गांधी का भी है, ताम्रपत्र है ये बाजू वाला। काका, जब आप गांधी जी से मिले तो आपको कैसे लगा? हमको बिल्कुल पूज्य भाव लगा है, उसके पूज्य भाव। चप्पल निकली गई तो मैं गाड़ी जब पास This is the last image of Gordhan Bhai that I carry with me. He had so much to tell me about Gandhi, but we didn't have enough time. He died 3 days after I met him. Before we went to Dandi, I wanted to go to the place where the salt battle was won. It was here where thousands of Gandhi's followers made peaceful attempts to break through the lines of British soldiers to pick up handfuls of salt. They were brutally beaten and arrested. But the world was watching, and it was a huge victory for Gandhi's Satyagraha. आपको अपना काम अच्छा लगता है? हाँ, काम तो अच्छा है, उसका धंधा ऐसा है, क्या है, उन्हाळ्याમાં ધંધો અમારો, ચોમાસામાં ખેતીનું જ કામ. હા, લોકો આગળ બહુ ઉછુમછું પકે, લોકો બહુ પાટા પર ઇન્ટરેસ્ટ નહીં મળે, લોકોને કામ નહીં કરવા માંગે લોકો. હવે હમણાં 86 રૂપિયા ક્વિન્ટલના ભાવ છે નિમક્કા. અને તો પેલા તો એક બધા દરેક અગરિયા પાટા બનતા, આખો અગર છે, આ બધા પેલા પટ્ટર પટા છે ને, પેલા સૂકા દેખાય ને, સૂકા પાટા દેખાય ને, वो सब बनता है. हमारा कुछ बनता नहीं, लोगों वो नौकरी धंधा वाला नौकरी करते हैं, हम जो हमारा काम नहीं है उसका हम ऐसा धंधा करते हैं. What difference does it make to the dead, the orphans and the homeless, whether the mad destruction is wrought under the name of totalitarianism or the holy name of liberty and democracy? After almost 250 miles, we had finally reached our destination. This desolate monument marked the end of Gandhi's march. पानी गड्ढा में भर गया था, तो नमक तो थोड़ा ही था, नमक ज्यादा नहीं था, थोड़ा नमक था. वो नमक गांधी जी ने यहाँ पर उठाया था. भाजपा की जो सरकार है यहाँ पर गुजरात में, वो सरकार गांधी विचार को मिटाने के लिए प्रयत्न कर रही है. गांधी के नाम पर वे लोग क्या कर रहे हैं कि हमारी जो जमीन है, जहाँ पर हम खेती करते हैं, जहाँ पर हम लोग भात पकाते हैं, वो सब जमीन अभी सरकार ले लेने के लिए प्रयत्न कर रही है और किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी को देने के लिए प्रयत्न कर रही है. यहाँ दांडी में 5 स्टार होटल की क्या जरूरत है? क्यों?
I was not surprised that even the soil of Dandi was not spared. I wonder what they will call this place once they get rid of the farmers. The Mahatma Gandhi Special Economic Zone? I wonder if the tourists who will come to shop at the Dandi Mall will find time to visit this museum. And if they do, will they see anything more than an old man walking barefoot, making a big fuss about a fistful of salt? We have made Gandhi irrelevant. We have frozen him in time. We have not bothered to reinvent his ideas, and we are living with the consequences. Our tyranny, if we impose our will on others, will be infinitely worse than that of the handful of Englishmen who formed the bureaucracy. Theirs is a terrorism imposed by a minority struggling to exist in the midst of opposition. Ours will be a terrorism imposed by a majority, and therefore worse, and really more godless than the first. Our shoot was almost over, and we were returning to Ahmedabad. The people who built the city are marching for their own survival. These sweepers, carpenters, domestic workers, and laborers make it possible for us to have a comfortable life, but we would like them to be invisible. "77 years after Gandhi's march, our journey ends with these images. We won our freedom 60 years ago, but what has really changed? We proclaim an economic miracle, but the inequality and the violence still continues. There is a new colonialism in India, but we don't seem to care. After all, we are the colonizers. वैष्णव जन तो तेने रे कहिए वैष्णव जन तो तेने